Yes, good afternoon, students. We have yesterday started with chapter 6 on the face of it, and we have already discussed about the idea or the theme conveyed by the writer in this chapter. Once again, just to link those students who have joined today, I want to repeat it that in this chapter we have two characters. It is explained in the form of a play, and these two characters, Mr. Lamb, an old man, and Derry, who is a young boy of 14 years old, both have opposite attitude towards life. And one similarity they both have is that they both are suffering from physical impairment, and they both are having some harsh realities in their life which they are suffering by living in the society in the real life. But they both took these realities or these harsh cruelties of the human beings in the society in a different way. The old man who takes all these things in the positive way, whereas the young boy Derry, he takes all these things in the negative way. And what is the problem with them? The similarity of the physical impairment which they suffer. The old man is having a tin leg because he had lost his leg in the war. He was in the army, and due to the war, he lost his leg, and now he is having tin leg. And the boy, young boy, Derry, has got acid on one side of his face. So the one side of his face is spoiled, and he considers himself not a handsome boy, and he feels that society does not like him, nobody wants to talk to him, and he's very reserved type of boy, does not want to mix with anyone and wants to live alone his own life. In the very beginning lines we are given that the old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. Note down these two qualities of that boy shown. Withdrawn means lost to himself, and defiant means he disobeys everything. He feels that society is not good to him, so he has nothing to do with the society. He does not want to take anything from the society, so he wants to live alone without involving with anyone. So what we have seen in the first scene, there are three scenes in the play, and in the first scene we have seen it is shown Mr. Lamb's garden, and there was the sound of the birds singing, trees, leaves rustling, and suddenly we heard the footsteps of Derry there. He enters into the garden of Mr. Lamb thinking that there was no one in the garden, it is empty. But when he reaches there, suddenly he listens the voice of Mr. Lamb from where the play starts. He says, "Mind the apples." He just warned him that he should take care of the apples which had fallen down with the wind, because these apples are the crab apples, means wild apples, and he can have injury on his feet if he just stumble on those apples. So he warned him not to keep his foot on that apple so that he could not trip, could not fall. So Derry suddenly got surprised when he noticed that there was someone in the garden, and he felt hesitated. I'm coming to the second page. He feels hesitated seeing Mr. Lamb there in the garden, and he again and again tells him that he has entered in the garden thinking that it was empty, and the house was also empty because the house of Mr. Lamb was attached with the garden. When he said house, Mr. Lamb says, "So it is." I'm starting from the second speech of Mr. Lamb on page 57. He says, "So it is, since I am out here in the garden, it is empty." So what he says, कहता हाँ हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, that it is empty. It here refers to the house, that this house is empty because I am sitting here in the garden, so the house is empty. The house is also of Mr. Lamb, that is empty at this time because he lives all alone. Until I go back inside, in the meantime, I'm out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors.
I told you to underline this line, which tells us about the attitude of Mr. Lamb, that he takes the life in a positive way. He says, it is a very beautiful, pleasant day, and I wanted to stay out in the garden to enjoy this day. I won't go inside the house till the day is beautiful. So here we come to know that he wants to enjoy the life. He does not want to avoid this life, though he is living all alone, being lonely even. He wants to enjoy his life and wants to live in the company of nature. Whereas Derry, he feels afraid, hesitated in the company of Mr. Lamb, because he had entered thinking that there was no one in the garden. Derry, panic. I have got to go. He got nervous. Panic here shows that he got nervous and immediately turned back and told Mr. Lamb that he needs to go. Mr. Lamb, not on my account. I don't mind who comes into the garden. The gate is always open. Only you climbed the garden wall. Now, again, in this statement, the gate is always open. That shows the open-mindedness of this character. Mr. Lamb, please underline these lines, which tells us about his character. So what he says, not on my account. If you want to go, don't go only due to me. कि सिर्फ मेरी वजह से नहीं जाओ कि मैं गार्डन में बैठा हूँ इसलिए आप यहाँ से जाना चाहते हो. I don't mind who comes into the garden. The gate is always open. He says, I'm never worried if anyone comes in the garden, because the gate of my garden is always open. Only you climbed the garden wall. You have not entered from the gate. You have come from the wall. You had climbed on the garden wall to enter into the garden. See, he was noticing everything, Mr. Lamb. Whereas Derry was coming inside the garden in a very secret manner, stealthily, चोरी चोरी चुपके से वो आना चाहता था ताकि इसको कोई देखे ना. But Mr. Lamb has noticed that he has not entered from the gate, which was open, but he had climbed on the garden wall. Derry, angry, you were watching me. He suddenly gets angry. He says, you were watching. Mr. Lamb, I saw you, but the gate is open. All welcome. You are welcome. I sit here. I like sitting. Note down the statements or his speech, whatever he is telling, all taking the positive view of life. Again he says, you, I saw you coming from the wall, climbing up, but the gate of my garden is open and all welcome. That means he welcome everyone. Whosoever wants to come in the garden, says, you are welcome. I sit here. I like sitting. He says, I like sitting in the garden and enjoy the beauty of nature. I don't want to go inside on such a beautiful day. So he says, I welcome everyone. I had not come to steal anything. Now, again, he is showing his feeling of fear, that Mr. Lamb must be thinking that he had come here in the garden to steal something. खुद ही क्या देता है, कहता I had not come to steal anything. Mr. Lamb, no, the young lads steal scrumped apples. You are not so young. But Mr. Lamb says, no, I don't think like this. But the young lads steal. That means the young boys who come in the garden, they steal. They scrump the apples. That means they just pick up the apples. But you are not so young. कि आप इतने बड़े नहीं हो, इतने young नहीं हो कि आप उन apples को तोड़ कर ले जाओ या उठा कर ले जाओ. Derry, I just wanted to come into the garden. He says, I just, then dash is given. That means he is hesitating and still feeling afraid to say something to Mr. Lamb. He says, I wanted to come into the garden, Mr. Lamb. So you did. Here we are then. He says, it is okay. You wanted to come and you have come now. So we are together now. Why you are worried and why you are afraid now? Derry, you don't know who I am. What is the problem in his mind? He says, you don't know who I am. मैं कौन हूँ? आप नहीं जानते हो. How you will allow me to enter into your garden, Mr. Lamb, a boy, 13 or so. See the very casual attitude of this person, Mr. Lamb. He says, I need not to know about your name or everything. I only understand that you are a boy and you are near about 13 years old. 14, pause, but I have got to know. Go now, goodbye. And he says, no, I'm not 13, I'm near about 14. And then again, he stresses on the same thing. He says, I need to go back now. And says goodbye.
Mr. Lamb, nothing to be afraid of, just a garden, just me. He says, why you are feeling afraid? आप क्यों डर रहे हो इतना मेरे से? It is only a garden and I am here alone in the garden. Why you are afraid of? But I am not. I am not afraid. People are afraid of me. So note down here his first statement that we got from his mouth. He says, I'm not afraid. कि मैं तो नहीं डर रहा. People are afraid of me. लेकिन लोग मेरे से डरते हैं. See his attitude and his thinking about the people of this world. कहता कि लोग मेरे से डरते हैं. Why should that be? Mr. Lamb is surprised. He says, why it is like this? That people are afraid of you? Derry, everyone is. It does not matter who they are or what they are, say or how they look or they pretend. I know, I can see. See his imagination or the thinking what he had created in his mind about the people around him. कि आस पास के दुनिया के लोगों के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में, अपने फैमिली के बारे में जो उसने एक माइंड में एक इमेज बनाया हुआ था. What he says everyone is, कि everyone is afraid of me. It does not matter who they are, वो कौन है, वो क्या कहते हैं, वो कैसे लगते हैं, मतलब कि मेरे क्या रिश्तेदार हैं या क्या रिलेशन है उनके साथ. How they pretend I know. This is I know this thing that they all are pretending. कि अगर वो मेरे साथ बातचीत भी कर रहे हैं या मेरे साथ कोई रह रहा है या मेरे साथ किसी का रिलेशन है, कोई फ्रेंडशिप है, तो दे आर ओनली प्रिटेंडिंग. दैट मीन्स दे डोंट हैव द रियल relation with me. I know everyone that they all are pretending, only making the excuses. I can see this. I can very clearly understand this thing. Mr. Lamb, see what? Mr. Lamb again got surprised. He says, what can you see? Derry, what they think? कहता मैं समझ सकता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ कि वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में. Mr. Lamb, what do you think then? कहता आप ये भी बताओगे मुझे कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में. See, sometimes it happens in life. When we have any inferiority complex in ourselves, we start imagining about the views of others about ourselves. कि हमारे बारे में लोगों के क्या व्यू होंगे, हम ये सोचना शुरू कर देते हैं. हम काम की तरफ ध्यान कम देते हैं. हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे. That creates a problem. So this is the same problem he is suffering from. He has an inferiority complex about his face, that he is not good looking. One side of his face has been spoiled with the acid. तो उसको लग रहा है कि लोग उसको देखकर उसके बारे में बातें करते हैं, और जो भी उसके साथ बात करना चाहता है या उसके साथ फ्रेंडली वे में बात करता है, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, वो एक्सक्यूज बना रहा है, बहाने बना रहा है. अदरवाइज रियलिटी में कोई भी उससे बातचीत नहीं करना चाहता. So this type of imagination and thinking he has created in his mind. He says, you think here is a boy, you look at me and then you see my face and you think that is bad. अब वो मिस्टर लैम को कहता है कि आप भी सोचो, कहता है इस बारे में कि आपके सामने एक लड़का खड़ा है और जब आप उसकी तरफ देखते हो, यू विल सी एट माई फेस, यू विल थिंक दैट इज बैड. कि आप सोचोगे कि चेहरा मेरा बहुत खराब है. दैट इज अ टेरिबल थिंग. That is the ugliest thing I ever saw. Please underline the adjectives which is using, what type of imagination and the things he has created, thinking he has created in his mind, that has made his attitude towards life negative, and everything he is taking in the negative side. He says that is a terrible thing. किसको कह रहा है? वो अपने फेस के बारे में कह रहा है. कहते it is a terrible thing. That is the ugliest thing I ever saw. You think, poor boy, but I am not poor. Underneath you are afraid. जिस आप सोच रहे होंगे कि ये एक बेचारा लड़का है, आपको मेरे पे पिटी आ रही होगी मेरा फेस देखकर, बट आई एम नॉट दैट मच पुअर. मतलब पुअर हियर नॉट इन द सेंस ऑफ मनी, लेकिन ब्यूटी के बारे में सोच रहा है. Says underneath you are afraid. Anybody would be. I am. When I look in the mirror and see it, I am afraid of me. कहता हर कोई हो सकता है ऐसे ही. कहता मैं भी डरता हूँ. When I look into the mirror and I see my face, I am afraid of me. कहता जब मैं अपने चेहरे को शीशे में देखता हूँ तो मुझे अपने आप से डर लगता है, तो लोग क्यों नहीं डरेंगे. इसलिए उसके माइंड में एक ये फीलिंग बैठी हुई है, एक उसने थिंकिंग बना ली हुई है कि लोग जो हैं उसको देखकर डर जाते हैं, उसके चेहरे को देखकर डर जाते हैं. सो दे जस्ट प्रिटेंड इफ दे टॉक टू हिम. Come to the next page on 59. Mr. Lamb, no, not the whole of you, not of you. See, Mr. Lamb is just giving him hope. He says, no, not the whole of you. कि सारा तो कुछ खराब तो नहीं है.
और हर किसी आपके बॉडी के बाकी पार्ट्स को देखकर तो कोई नहीं डरेगा, नॉट ऑफ यू, कि ना आपको डरना चाहिए. Derry, yes. And then he pauses. He says, Mr. Lamb, later on, when it is a bit cooler, I'll get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They are ripe for it. I make jelly. It is a good time of year. September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit, I often say, but it is best picked and made into jelly. You could give me a hand. Now, see, in this speech, he is only talking about the apples which grow in that garden. He has stopped discussing about Derry's face. That again gives a negative idea to Derry कि वो बात ही नहीं करना चाहता उसके चेहरे के बारे में. Next, in the next statement we will see कि मिस्टर लैम्ब एकदम से डाइवर्ट कर देता है टॉपिक को ही, कि उसके फेस के बारे में डिस्कस करते हुए एकदम से वो शिफ्ट हो जाता है अपने गार्डन की तरफ. ये कहता जब थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता है, when it is bit cooler means when the weather is cool, what I do, I get my ladder and a stick and pull down all these wild apples when they are ripe and I make jelly out of them. जैसे हम जैम वगैरह बनाते हैं ना, तो ऐसे ही वो कह रहा है कि मैं भी उससे जेली बनाता हूँ. इट इज अ गुड टाइम ऑफ ईयर. सितंबर का बहुत अच्छा टाइम होता है जबकि अच्छे ऑरेंज और गोल्डन एप्पल उसमें आते हैं. एंड दैट इज अ मैजिक फ्रूट एट दैट टाइम, आई ऑफन से, but it is best picked and made into jelly. I use the best use of those apples. I made best use of those apples. I picked up all those orange and golden apples and I made jelly out of that. You could give me a hand, so you can help me in that, because now it is the time and I'm going to pick up all these apples for making jelly out of that. So you can help me, give me a hand means you can support me, you can help me. Derry, what have you changed the subject for? People always do that. Why don't you ask me? Why do you do what they all do and pretend it is not true, it is not there? In case I see you looking and mind and get upset, I will tell. You don't ask me because you are afraid to. See, again the same stress on the point that people are afraid of him. That you were discussing about my face, you were asking me what people think about you, and I was telling you that people are afraid of me, and even I get afraid when I saw my face in the mirror, and I'm also afraid of me. He says, what have you changed the subject for? आपने कहता सब्जेक्ट क्यों बदल दिया? पीपल ऑलवेज डू दैट. ऐसा ही करते हैं, कहता लोग सब ऐसे करते हैं. व्हाई डोंट यू आस्क मी? व्हाई डोंट यू डू व्हाट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट देयर? कहता आप क्यों ऐसा प्रिटेंड नहीं कर रहे जैसे कि लोग मेरे साथ प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होगा. मतलब लोग उसको ऊपर ऊपर से तसल्ली देते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरे साथ लाइफ में कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, आप बहुत सुंदर हो. ऐसे ही लोग झूठे बहाने कहता मुझे बनाकर बनाते हैं. आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे? आपने तो सब्जेक्ट ही बदल दिया. क्योंकि क्या सोच रहा है वो? इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट. मैंने नोट किया है कि आप भी मेरी तरफ देखोगे और आपके माइंड में भी आएगा, आप भी अपसेट हो जाओगे मुझे मेरा चेहरा देखकर. एंड आई विल टेल, यू डोंट आस्क मी, और आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग एंड आई एम टेलिंग यू दैट यू वोंट आस्क मी एनीथिंग बिकॉज यू आर अफ्रेड टू. क्योंकि मुझे पता है कि आप भी मेरे से डर रहे हो. सी द सेम स्टेटमेंट ही हैज गिवन व्हाट द पीपल आर डूइंग. कहता कि जैसे लोग मेरे से डरते हैं ऐसे आप भी मेरे से डर रहे हो, इसलिए आपने अपना डिस्कशन का और टॉपिक ही बदल लिया, आपने सब्जेक्ट ही बदल लिया. आप मेरे बारे में बात करते करते अपने गार्डन के बारे में बात करने लग गए. मिस्टर लैम, यू वांट मी टू आस्क, से सो देन. कहता ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे पूछूं तो आप बताओ. Why he was avoiding? Because he feels that person should not be made to realize about the weak points. कि अगर किसी में कोई कमी है तो उस पॉइंट को, उस कमी को, उस वीकनेस को उस पर्सन को रियलाइज नहीं करवाना चाहिए कि उसमें ये कमी है. That's why he stopped talking about his face and changed the subject. But now he said कि if you want to ask you, then tell me what you want to tell. Derry, I don't like being with people, any people. See, now he is opening up with Mr. Lamb. धीरे धीरे वो Mr. Lamb के साथ खुल रहा है और उसको अपना जो थिंकिंग है, जो उसके माइंड में बातें हैं, उनको बता रहा है. उनको क्या कहता है कि मैं नहीं चाहता लोगों के साथ बातचीत करना. आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, लोगों के साथ रहना मीन्स मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ. एनी पीपल, कोई भी आदमी हो, कहता कोई भी लोग हों,
मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता, आई वॉन्ट टू बी अलोन। क्योंकि उसको ये फीलिंग आती है कि लोग जो है उससे डरते हैं और जो उसके साथ रहना चाहते हैं वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, एक्चुअल में रियलिटी में उसके साथ कोई भी अटैच नहीं है। आई शुड से to look at it, I should say, you got burned in a fire. Mr. Lamb just want to ask him because he was anxious to tell. Says, I would like to ask you, would you like to tell me that how you got your face burned? It was burnt in a fire, Derry, not in a fire. I got acid all down that side of my face and it burned it all away. कहता मेरी एक तरफ, उसको एक्सप्लेन करता है कि फायर में नहीं, मेरे एक साइड पे एसिड पड़ गया था फेस के ऊपर एंड आई इट बर्न्ड इट ऑल अवे, पूरी तरह से वो जल गया। इट एट माय फेस अप, इट एट मी अप। नोट डाउन दिस स्टेटमेंट। कहता कि इसने मेरे फेस को जला दिया, फेस को खा लिया और मुझे भी खा लिया। मुझे भी खा लिया मीन्स एक तरह से मेरी लाइफ भी वहीं से खत्म हो गई। and now it is like this and it won't ever be any different and it will always be like this, हमेशा ऐसा रहेगा और कभी भी कुछ भी मेरी लाइफ में डिफरेंट नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं आएगी मेरी लाइफ में। बस he has created a mind feeling in his mind, an image or thinking in his mind that nothing will change in his life and he will remain as it is in his life. No one will love him, no one would like him, so he had cut off himself from the world, दुनिया से ही अपने आप को उसने कट ऑफ करके सेपरेट कर लिया और वो रिजर्व अकेला रहना पसंद करता था, किसी के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहता था। मिस्टर लैम्ब सेज नो डेरी आरंट यू इंटरेस्टेड। तो मिस्टर लैम्ब से कहते कि ऐसा नहीं है, पूछते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड मिस्टर लैम्ब यू आर ए बॉय हु केम इनटू द गार्डन प्लेंटी डू। कहता तुम एक लड़के हो जो कि ऐसे मेरे गार्डन में आए हो और ऐसे बहुत से लड़के आते हैं इस गार्डन में। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, और मैं हर किसी में इंटरेस्टेड हूँ। एनीथिंग, there is nothing God made that does not interest me. Underline this line. Again we get his positive view कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि भगवान ने बनाई हो और हमें उसमें इंटरेस्ट ना लेना हो। We should take interest in everything whatever God has created and what he is doing the same. He says I'm interested in anybody, anything, कोई भी आदमी आ जाए, कोई भी पर्सन हो, कोई भी चीज हो, कहता जो भगवान ने बनाई है आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, उसको इशारा करके बताता है, कहता उधर देखो, उस दूर पे दीवार थी, उस दीवार के पास उसको कहता देखो व्हाट कैन यू सी, तुम्हें क्या नजर आ रहा है। Now this is the idea of the thinking. Now note down from here the point what he wants to teach him. Now he is going to give a lesson of life. उसको जिंदगी में lesson सिखा रहा है, उसको motivate कर रहा है, encourage कर रहा है that we should see the good things in life. We should not see the bad things in life because everything depends upon our thinking. जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, हमारा आइडिया जो है वैसा ही क्रिएट हो जाता है और हम वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं। उसी से हमारी थिंकिंग जो है नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाती है। अगर हम दो चीजें इकट्ठी पड़ी हैं तो उसमें हमें गलत चीज जो है वो नजर आती है तो हमारा आइडिया नेगेटिव हो जाता है, हम अच्छी चीज को देख ही नहीं पाते बिकॉज आवर थिंकिंग इज नेगेटिव, हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। द सेम वे ही वांट्स टू जज हिम, उसकी एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को, उसके थिंकिंग को वो जज करना चाहता है और उसको मोटिवेट करना चाहता है। इसलिए उसको कहता है कि दीवार के उस तरफ देखो, दूर देखो, वो दीवार के पास तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ डेरी, ही सेज रबिश, मीन्स वहां गंदगी है, ढेर लगे हुए हैं गंदगी के गार्डन के अंदर, एक तरफ कहीं कुछ मलबा सा, कुछ गंद वगैरह पड़ा होगा, झाड़ियां, ये वो सब पत्ते, तो उसको वो नजर आ रहे हैं। मिस्टर लैब रबिश, लुक बॉय, लुक व्हाट डू यू सी। कहता ध्यान से देखो बेटा, लड़के आप ध्यान से देखो कि आपको क्या दिख रहा है। वो फिर ध्यान से देखता है, कहता जस्ट ग्रास एंड स्टफ एंड वीड्स। क्या है, कहता वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुझे ग्रास नजर आ रहा है, स्टफ मीन्स ऐसे मलबा सा, गंदगी इकट्ठी करी हुई है, वीड्स जड़ी बूटियां जो कि यूजलेस होती हैं गार्डन में, वो नजर आ रही हैं। मिस्टर लैम, some call them weeds. Now see, note down the statement of Mr. Lamb which teaches a lesson to him. Says some call them weeds. If you like, then a weed garden, that there is a fruit, there are flowers and trees and herbs all sorts. कहता अगर आप उनको weeds कह रहे हो, it is your liking. If you like,
कि अगर आपको अच्छी चीजें पसंद हो तो आप अच्छी चीजें देखोगे गार्डन के अंदर, अगर आपको अच्छी चीजें नहीं पसंद आएंगी तो आपको गार्डन क्या दिखेगा, एक वीड गार्डन। वीड होता है ऐसी जड़ी बूटियां जो कि यूजलेस होती हैं, फालतू में कई बार जड़ी बूटियां उगाती हैं गार्डन प्लांट खेतों के बीच में, तो यू कैन कॉल दैट अ वीड गार्डन। लेकिन अगर आप अच्छा देखोगे तो यू कैन सी द फ्रूट, फ्लावर्स, ट्रीज, हर्ब्स, ऑल सॉर्ट ऑफ गुड थिंग्स यू कैन सी, बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन आपको वहां पर सिर्फ वीड्स नजर आ रही हैं। आई ग्रो वीड्स देयर। व्हाई इज वन ग्रीन growing plant called a weed and another flower? Please underline the statement. He wants to ask him कि गार्डन में दो तरह के प्लांट्स हैं, दोनों ग्रीन हैं, एक ग्रीन को हम कह देते हैं कि ये वीड है और दूसरे को हम कह देते हैं कि ये फ्लावर है। हाउ इज इट? हम उन दोनों में डिफरेंस क्यों नहीं देख पाते? Says why can't we look at the flower? हमें दोनों चीजें क्यों नजर आती हैं? Because we have negative thinking. We look at the negative things. जो useless चीजें होती हैं हम उनकी तरफ देखते हैं और गलत सोचना शुरू कर देते हैं. That makes our thinking negative. लेकिन अगर हमारा आइडिया और हमारी थिंकिंग, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो हमें वो वीड्स नजर ही नहीं आती। फिर हमें क्या नजर आएगा? वहां पर हमें सिर्फ ग्रीन प्लांट्स नजर आएंगे, हमें फ्लावर्स नजर आएंगे, हमें फ्रूट्स नजर आएंगे। दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन आवर थिंकिंग एंड आवर outlook, how we look at the things in life. If we have negative outlook, we can see only the bad things. If we have positive outlook, we can see only the good things. We can never see the bad things. हमें वो दिखाई ही नहीं देती फिर जब हमारा positive outlook होता है। What is the difference? It is all life growing same as you and me. कहता यही सब कुछ तो लाइफ है, जैसे तुम और मैं, कि तुम नेगेटिव सोच रहे हो, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, उसी गार्डन में बैठा है और उसको सिर्फ वीड्स नजर आ रहे हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जबकि मिस्टर लैम उसी गार्डन में बैठे हैं, उनको प्लांट्स, फ्लावर्स, फ्रूट सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। एंड ही फील्स दैट एवरीवन इज कमिंग इन द गार्डन, सम चिल्ड्रन कम इन द गार्डन, दे प्ले देयर, he enjoys time with them and he uses those fruits to give those children also, and he enjoys their company. So in this way he was leading a very good life, a happy life. But Derry says we are not same. हम दोनों कहता है एक जैसे नहीं है। आप कैसे कहते हो कि इट इज ऑल लाइफ सेम एज यू एंड मी, कि जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूँ इस लाइफ में, तो एक जैसी लाइफ है हमारी, ग्रो हो रही है। मिस्टर लैम क्या कहता है डिफरेंस है? मिस्टर लैम उसको समझा रहे हैं। सेज आई एम ओल्ड, यू आर यंग। क्या डिफरेंस है? कहता मैं बूढ़ा हूँ, तुम यंग हो। यू हैव गॉट अ बॉर्न फेस, आई हैव गॉट अ टिन लेग। यही डिफरेंस है ना। कहता तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, मेरे पास लेग टिन की है। नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर। कहता कोई खास फर्क नहीं है, तुम वहां खड़े हो और मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर इज द डिफरेंस? आप बताओ। कहता क्या डिफरेंस है? जैसे आप खड़े हो वैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, और you are also leading a life, but the difference, you also have some problem on your face, I have problem in your leg. Then the boy is not ready to accept the things. We'll continue with the chapter tomorrow, and